You're working in a healthcare setup and you're presented with a problem. That problem is related to the data and you're trying to find out how do you know or learn more about this thing. एग्जाम्पल देते हैं, आप एक हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं या नर्स हैं या एसोसिएटेड हेल्थ केयर स्टाफ हैं और आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि आपने ऑडिट कैरी आउट करना है अपने वार्ड का। अब आपने बड़ी मेहनत से डेटा कलेक्ट कर लिया और आपने बहुत सारे वेरिएबल्स उसमें देखे। इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने वो 7-8 या जितने भी आप वेरिएबल्स कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्टडीज़ के अंदर हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स आर बीइंग कलेक्टेड और सारी मेहनत की, 6 महीने आपको लगे और आप वापस जाते हैं। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1, वो स्टैटिस्टिशियन वहाँ पे है ही नहीं, समवन एल्स हैज़ कम इन और उसको आपकी स्टडी डिज़ाइन करनी पता, नाउ यू आर ट्रैप्ड। दूसरी, नंबर 2, वो स्टैटिस्टिशियन वहाँ है लेकिन वो उसको एक सर्टेन अंदाज से एनालाइज कर रहा है और आपको कुछ और आउटकम्स चाहिए और वो डिसाइड पहले हुआ नहीं था, नाउ यू आर ट्रैप्ड अगेन। और नंबर 3, आपकी स्टडी अच्छी तरह से हो जाती है लेकिन ये फाइनल भी हो जाता है, but the study is actually probably conducted by you, but the study is actually designed by a statistician who was looking through his own lens and he is not a clinician. So that becomes a problem. So how to solve that? Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Shoaibsaadat. Thank you so much for joining me again. वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंसेज और मशीन लर्निंग के हवाले से, और ये स्पेशली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है उन लोगों के लिए हु वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंसेज एंड नो अ बिट मोर अबाउट इट, और इसको अप्लाई करना चाहते हैं अपने डेली करियर्स में और लाइफ में। ये एम्ड है एट एवरीवन, लेकिन स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एनीवन हु इज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ केयर, उसको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ यू डू द स्टेटिस्टिक्स योरसेल्फ। अब the issue with it is that you need to learn statistics and it's a very dry subject, if not boring, initially. So the last thing you want is basically to try to get into it, learn a bit, learn the bits and pieces of it, and then basically give up. That's the last thing you want. So the best solution to it is try to take the baby steps and go one by one and learn all of these things, but in a fun way. So इस वीडियो में हम बात करेंगे how can you make it good, fun and understanding to know about statistics, but more importantly data science in general. और हम बताएंगे कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं टू गेट स्टार्टेड एंड टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंसेज। देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो इस वक्त हैं आप ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज। द प्रॉब्लम विद यूट्यूब इज़ कि इसमें आपको जो चाहिए एग्जैक्टली वो चीज़ समटाइम्स नहीं मिलती, और दूसरी बात यह है कि एक सर्टन मैथडोलॉजी बताई जाती है एंड यू फॉलो दैट एग्जैक्टली, प्रॉबली यू विल गेट रिजल्ट्स। फिर उसके बाद आप परम्यूटेशन या अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं कर सकते विद द सेम अमाउंट ऑफ डेटा। Another resource could be trying to get into courses, and you can find different courses online. I will tell you about a few, lekin the problem with them is that there are so many courses. It's a sea of courses, and you can actually get trapped into the idea of trying to find the best one for you, and you end up not finding anyone for that matter. Other resources like taking a university course, so that's another opportunity that someone can avail अगर आपके पास टाइम और अपॉर्चुनिटी और पैसा समटाइम्स ऑब्वियसली है, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली अगर आप एक फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप जाके उस चीज़ को कर सकें, मास्टर्स कर सकें या कोई और डिग्री ले सकें। So that becomes an opportunity, but it's an unlikely one given the circumstances that all of us live in. Let's get on to some of the resources that I think are really good to start and to learn. Let's start with the languages. The first thing जो कि mind में आता है कि which tool or language should I use to get started? There are different tools that you can try. Some basic tools जो कि हम सब ने देखे हुए हैं probably, और जो basically ये वीडियो देख रहा है I'm sure उन्होंने देखे होंगे ये tools. उन tools में we've got something like Stata,
SPSS, ये जो टूल्स हैं बड़े कॉमन टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं स्पेशली हेल्थ केयर सेटअप में और नॉन हेल्थ केयर में भी. सो यू कैन ट्राई टू लर्न दैम. इनकी लर्निंग कर्व इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आर पॉइंट एंड क्लिक, जिस पे आप बेसिकली मेन्यू के ऊपर जाते हैं और ऑप्शंस क्लिक करते हैं. लेकिन कोर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. पहले आपकी फाउंडेशंस थोड़ी सी होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स के अंदर, फिर आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो इट मेक्स सेंस. सो अगेन आई विल प्रॉब्ली रिकमेंड कि टूल्स आर वन पार्ट. तो फाउंडेशनल थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड स्टेटिस्टिक्स. और अगर वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्टार्ट होगा. देन वट एवर द टूल दैट यू विल बी यूजिंग, you'll be very comfortable in using that. So apart from these tools, there are other tools which are very popular and very powerful, and these are languages. दो बड़ी choices इसमें आपको दिखती हैं, R और Python. दोनों outstanding हैं and I worked in both. I love both of them. I like Python a bit more than R. The reason being कि आप उसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हैं apart from data sciences. Both of these languages are absolutely simple and very easy to learn. There are other languages, Java जिसमें आ जाता है, C# आ जाता है, ancient languages में Visual Basic and those things, अगर आपने कोई product भी create कर. So, but ideally, if you want to get started and if you want to get started simple, you should either choose Python or R. Either of them are really good. R is really good. And I'm also a big fan of that. उसके अंदर जो libraries हैं, बेशुमार libraries हैं, which is the power of R. और especially अगर if you're talking about data sciences and machine learning, it's a very well equipped and very well packed package. उनको packages कहते हैं by the way, libraries को. And you will literally find a package for everything if you're doing R. If you can learn both, but if you don't have time, you can pick either of these and you won't regret. Apart from languages, the next step is obviously understanding the core and basics. दो तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए. एक तो languages आपको थोड़ा idea होना चाहिए how to code. You don't need to do a lot. There are so many resources. Google is your best friend. GitHub is your best friend. और इसी तरह से आप Stack Overflow, you can literally you cannot ignore Stack Overflow and the power that it has. So if you obviously knew, there will be questions जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी how to approach that. So if you're probably new, then there will be problems that you need to know the answers to. Stack Overflow is your best friend. So one of the courses that I will recommend is Data Science Specialization by Johns Hopkins. Outstanding course, and I will recommend it as the number one thing that you should do. How it will help you is basically it will get you started from point zero, or it will assume कि आपको कुछ नहीं पता and it will get you started from there. That's why I think it's one of the best things that you can do if you want to learn data sciences and especially machine learning side of things. So there are several videos and you get to learn huge deal from a course like this. So this is my top recommendation if you want to get started. Then if you want to learn about specifically R and data sciences, then there is another course. अगर आप ये पूरी specialization नहीं करना चाहते हैं, and if you just want to focus on R and associated specialization or foundations in R, then there is a course called Data Science Foundations using R Specialization. इस पे कुछ 5 or 6 videos chapters का ये course है. It's again an outstanding course, again by Johns Hopkins. So you can go to Google and search for Coursera.com, and there you will be able to find out these courses. Whether you're talking about the full specialization by Johns Hopkins, or we are specifically talking about the foundations using our specialization course. So you can find all of these on Coursera. Apart from that, edX is an outstanding resource. वो भी मैं recommend करूँगा अगर आप चाह रहे हैं कि और simple courses, especially language based अगर courses आपने learn करने हैं. Most of the universities edX के ऊपर अपने courses रखती हैं और बहुत सारों ने free रखी हुई है. So you can try that as well. So if you're one of those people who love to learn from the books, then I've got some recommendations for you. I myself, I'm not a book guy, and I like to see the videos to learn practically. लेकिन अगर आपको book पसंद है और book से सीखना चाह रहे हैं, foundations अपनी सही करना चाह रहे हैं, then there are recommendations. If you want to learn from books about R, so one of my all-time favorite books, it's called a classic, free available है YouTube पे और Google पे, आप इसको search करें, you will find more about this. It's called Introduction to Statistical Learning with Applications in R.
by Garrett James. Outstanding book. So you can see it here as well. And this is considered to be a classic for a reason. So इस पे आपको काफ़ी बेसिकली ये लेके जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से आपको इंट्रोड्यूस करेगा to the whole idea of data sciences and machine learning. There is another book, Doing Data Science in R, और ये it's by Mark Andrews. It's another outstanding book, and again specifically R specific book है जिसको आप जिसमें आप R भी सीख रहे हैं and you're also learning about data sciences and machine learning. One of the other books I think you can learn from is called Probability, Statistics and Data, A Fresh Approach Using R. Again, R specific book है, लेकिन it's by Darren Spiegel. So if you can search on Google, you can find this. Again, it will take you slowly and it will introduce you to the idea of probability, statistics, and then slowly getting into the idea of analyzing data. So all of these books are outstanding. At least they will get you started in the whole idea of data sciences. So I'm planning basically to go into more detail कि आप इसको फर्दर कैसे सेगमेंट और डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं लर्निंग का और फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के. सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर. If I see that more people are interested, then I might actually end up creating a whole series of videos about it, जहाँ पे आपको एक proper structure के अंदर के how to approach interval wise और किस टाइम पे क्या चीज़ अचीव की जा सकती है and how can you incorporate into your daily projects and daily life as well. इसके ऊपर काफ़ी एक interesting course create किया जा सकता है. So if you're interested, please let me know. I'll be more than happy to contribute it here in the YouTube family. Once again, thank you so much for joining me. I will see you again in another video. So if you like my content, please like it, share it, and don't forget to subscribe. I will see you again in another video. Take care and Allah Hafiz.